guys, welcome back to my channel and for today's video I'm doing a Mehendi makeup look. Now Mehendi is a function जिसमें मुझे लगता है कि मेकअप ना बहुत ही glowy, dewy, fresh makeup बहुत अच्छा लगता है. Even colorful eye looks look really good for Mehendi function, even if it's the bride or if you're going as a wedding guest. But I'm going to do a makeup look which is going to be very fresh, dewy and something that you can wear during the day or night. You can do this look as a bride or as a wedding guest. It's applicable on everybody. थोड़ा बहुत आप आई लुक की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो according to what you're comfortable with. I'm going to do like a step by step makeup look, trying to explain every step as much as possible and still trying to keep this video short and compact and full of information. So yeah, let's get started. But before that, I would really appreciate if you subscribe to my channel and hit the bell notification button so that every time I put up a video, you are notified about it. And now let's get started with the makeup. Okay, so the first step is prepping your skin and I've already moisturized my face. So the next step is this makeup oil. This is Renee Glass Glow Pre-Makeup Oil. And what this will do is basically it will hydrate my skin और अच्छे से skin को base अच्छा provide करेगा जिससे कि जो makeup है वो और भी सुंदर लगे एंड कोई भी ड्राई पैचेस होंगे तो वो सब कुछ हाइड्रेट कर देगा सो दैट द मेकअप और द फाउंडेशन विल नॉट लुक केकी, क्लिंग टू ड्राई पैचेस और एनीथिंग लाइक दैट. सो दिस इज व्हाट इट विल डू. द नेक्स्ट स्टेप इज फाउंडेशन. आई एम यूजिंग द Nykaa Skinsheild foundation. Now why I am using this one is because it has great coverage. So I don't have to use a lot of product. थोड़े प्रोडक्ट में भी मुझे अच्छी कवरेज मिल जाती है. And to enhance that glowy, dewy look, what I'm going to do is I'm going to mix MAC strobe cream. अब आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रोब क्रीम ही यूज करने की जरूरत नहीं है. यू कैन यूज एनी प्रोडक्ट लाइक लैक्मे ल्यूमी और शुगर का भी ऐसे प्रोडक्ट आता है तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो. आई एम जस्ट गोइंग टू मिक्स द टू ऑन द बैक ऑफ माई हैंड. This is the final coverage that I've got out of the foundation. It's so good. Now I'm going in with the concealer. Again, this is a high coverage concealer and a little bit goes a really long way. There you go. I had to use thoda amount and I'm good to go. It's all covered up. Now we are going to set the face. So मैं पूरा face नहीं set करूँगी. I'm going to use the K Beauty powder. What I'm going to do is I'm going to take a little bit and set my under eyes, my eyelids and the center of my forehead and my smile lines क्योंकि यही सारी जगह हैं जो थोड़ी सी क्रीज हो जाती हैं. एंड बिकॉज जो मेरा फाउंडेशन है वो सैटिन फिनिश का है, इट इज़ नॉट ड्यूई फाउंडेशन, इट्स नॉट ग्रीजी और एनीथिंग. सो मुझे बाकी का फेस सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड जो ग्लो अभी दिख रहा है मेरे फेस पे वो वैसा का वैसा रहेगा. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कॉन्टोर माई फेस अ लिटिल बिट. बहुत ज्यादा हैवी कॉन्टोर नहीं करूंगी, स्लाइट ही करूंगी. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस K Beauty stick contour. What I'm going to do is apply a little bit on all of the places that I have to. So यहाँ पे अप्लाई करूंगी और अपनी जॉ लाइन पे अप्लाई करूंगी और इसे ब्लेंड कर लूंगी. सेट नहीं करूंगी बिकॉज दिस इज अ क्रीम प्रोडक्ट तो ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं लगेगा. Now I'm not going to set this contour. आप चाहो तो एक पाउडर कॉन्टूर से सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ब्लश एंड क्योंकि हम सारे क्रीम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो ब्लश भी क्रीम ही होगा. I'm going to use this ELF मोनोक्रोमैटिक मल्टी स्टिक ब्लश. तो इसको ब्लश की तरह, आई शैडो की तरह लिप्स पे आप कैसे भी यूज कर सकते हैं. एंड इसके अंदर ना शिमर पार्टिकल्स भी हैं, बहुत ही फाइन है. सो ये ग्लोई लुक भी दे देता है. अलॉन्ग विद द कलर इट ऑल्सो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ ग्लो. So as you can see, blush ने इतना अच्छा कलर दिया है, उसके साथ इतना अच्छा ग्लो भी दिया है. That's why I love this blush stick. अगर नहीं ट्राई करिए ना अभी तक तो definitely give it a try. It's not very expensive also. I'm going to move on to the brows first and then the eyes. I'm going to use this Inside Cosmetics Smudge Free Eyebrow Pencil. इसमें एक तरफ पेंसिल साइड है एंड देन स्पूली है. सो मैं फिल इन कर लूंगी अपनी ब्राउज को इससे बहुत अच्छे से एंड देन आई एम गोइंग टू ब्रश देम आउट एज वेल विद दिस सो दैट प्रोडक्ट अच्छे से स्प्रेड हो जाए.
Okay, so I'm switching to voiceover because construction noises were getting too loud and you just could not hear my voice anymore. So yeah, I'm moving on to my eyes now, and I'm using Mars ka ye eyeshadow palette, which is so inexpensive and so good. So I'm taking lightest shade from this palette and usko main laga rahi hu all over my eyelids and also in my crease, and this will give me a nice base and also act like a transition shade. फिर मैं जो सेंटर वाला शेड है ना उसको यूज़ कर रही हूँ और उसे लगा रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर्स पे. आई एम क्रिएटिंग अ वेरी वार्म लुक. सो उसको मैं लगा रही हूँ एंड देन ऑल ओवर माई आईलिड्स. ये दूसरा पैलेट है, स्विस ब्यूटी का है. आई मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो उसमें से ग्रीन शेड मैं ले रही हूँ एंड इसको लगा रही हूँ. क्योंकि मेरा आउटफिट ग्रीन था तो मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ. आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो. और फिर ब्लैक शेड लिया मैंने वापस से वो मार्स वाले पैलेट में से, एंड उसके बाद उसको मैंने अपने lashes पे like a liner लगाया, but like a smudged out liner which looks really really nice. So that's what I did, and that's pretty much all I did for the eye look. Moving on, I went in with the mascara. This is Smashbox ka mascara. It's expensive. You don't have to use this one. You can use any mascara. I just had this one. So मैं लगा रही हूँ, but yeah, I'm coating my upper and lower lashes really nicely. And then finally for lipstick, I'm using Renee की lipstick. I'll put the shade name in the description box. But मैंने हल्की सी लगाई and smudge कर दी all over my lips. And that pretty much is the whole look. I hope you enjoyed it. I hope you found it helpful. I hope I was descriptive enough and you would be able to create like the whole look by yourself. It's very easy, it's very simple, very classy. So yeah, I hope you guys enjoyed it. Give this video a big thumbs up if you did, and don't forget to subscribe. I will see you guys in my next video. Bye.